Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says Huygen was the first scientist who proposed the idea of wave theory of light. He said that the light propagates in the form of wavefront. A wavefront is an imaginary surface at every point in of which waves are in the same phase. For example, the wavefront for a point source is a collection of concentric spheres which have center at the origin. W1 is a wavefront and W2 is another wavefront. The radius of wavefront at time t is c into t. In this case, where c is the speed of light, the direction of propagation is perpendicular to the surface of the wavefront. The wavefronts are plane wavefront in case of a parallel beam of light. So यहाँ पे हम देख सकते हैं W1, W2, W3 are wavefronts. Huygen also said that every point of the wavefront act as a secondary source of a secondary wavelet. The tangent drawn to all secondary wavelet at a time is a new wavefront at that time. The wavelets are to be considered only in the forward direction, that is the direction of propagation of light, and not in the reverse direction. If a wavefront W1 at time t1 t is given, then to draw the wavefront at time t plus delta t, take some points on the wavefront W1 and draw spheres of radius c delta t. They are called secondary wavelets. Draw a surface W1 which is tangent to all this secondary wavelet W2 wavelets. W2 is a wavefront at time t plus delta t. Huygen proved the law of reflection and law of refraction using concept of wavefront. Up the main question is the plane wavefronts are incident on a spherical mirror as shown. The reflected wavefront will be. So हमें चार options given है. So we need to check which of the option given is correct, right? So to understand this question, we need to understand about the concept of wavefront. So wavefront basically इसको अगर हम define करें, wavefront it is the locus of all points on a surface where all points are in same phase. So इसे कहते हैं wavefront. Let's suppose for example हमारे पास कुछ light rays है, they are moving in this direction, ठीक है. अगर मैं उसको एक perpendicular एक surface imaginary surface plane imagine करूं, ठीक है ना, which is perpendicular to this ray, तो this plane will form a wavefront, right? So ये कहलाएगा हमारा क्या, wavefront, ठीक है. So there are various types of wavefront that we need to keep in mind. First is the spherical wavefront. अगर light source हमारा point source of light है, so इसमें जो wavefront निकलेंगे वो spherical निकलेंगे, right? जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा, ठीक है. तो ये हो गया हमारा spherical wavefront. Spherical wavefront, ठीक. इसके बाद आता है लीनियर सोर्स ऑफ लाइट अगर है हमारे पास, so इससे जो वेवफ्रंट निकलेंगे वो सिलेंड्रिकल होंगे, तो इसे हम कहते हैं सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट. सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, ठीक है. सिमिलरली वी हैव प्लेन वेवफ्रंट. अगर लाइट सोर्स बहुत दूर से कहीं से अपीयर हो रही है, सो वी नो के दे अपीयर टू बी पैरेलल. एंड अगर हम इसके ऊपर एक इमेजिनरी सरफेस जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है. सो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट वेवफ्रंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी कैन से वी हैव अ प्लेन मिरर, सॉरी स्फेरिकल मिरर है, एंड लाइट प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है, मीन्स बहुत दूर से लाइट सोर्स आ रही होंगी. सो हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर टू पेरिफेरियल रेज. अब हमें पता है कि वो कॉनकेव मिरर है, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से. तो पूरी लाइट कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गई है, फोकस पे, ठीक है ना. अब ये लाइट पूरी फोकस पे जब कॉन्सेंट्रेट होगी तो वी नो कि फोकस से दिस पॉइंट विल एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, राइट. एंड अगर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेगा, सो इसमें से वेवफ्रंट स्फेरिकल निकलेंगी, ठीक है. सो दिस विल बी द केस. सो अगर हम ऑप्शंस को देखें, सो क्लियरली इट इज मैचिंग विद ऑप्शन ए. सो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.